discussion would be a generic one, but again, we'll touch upon. I recently saw a report shared by NDTV Profit, wherein they talked about the sector-wise FII inflow and outflow of data. So that we will be discussing that. And apart from that, if anybody from the listeners have any views or maybe any questions, will be whether the voice thing is proper or not, because I saw there were some blurred profiles, maybe some network issue. Although the amount of the I mean, which is sold by the FIIs is not very sizable, but in January first 2 weeks, IT sector has been sold by the FIIs. So that is one, and on the top of that, अभी एक भाई थे शायद वो क्वेश्चन आपने सुना होगा. So he was asking about IT sector, although I had told him about our session, but again, few pointers around that. The broad view आपका क्या है? Okay. So to be very honest, I didn't see this FII data until you sent me. So उसके पहले मैंने देखा नहीं था. I don't really track all these things कि sectoral FIIs का allocation कैसे change हो रहा है and all that stuff. Like we have been discussing on this topic since long time. I believe that IT में positioning is the only key thing that matters. And if you're able to sense that a company is, positioning itself, let's say for a couple of years ahead in time, probably एक दो साल वो perform नहीं करेगी, but उसके बाद में it will cover up, right? So you saw how Newgen perform, for example. Similar to that, there are certain companies that are, that fit that particular description. So to be very honest, ये जो large cap IT है, they are struggling on various different fronts, right? For example, TCS में recently management transition हुआ है, Infosys में भी they have a lot of executive level folks leaving and joining other competitors. और आप अगर देखोगे इन जनरल तो ये सब जो टॉप 5-6 प्लेयर्स हैं, everybody is still talking about the cost optimization, cost takeout deals, margin optimization, and all these kind of things, right? So uh, I would say that ये large cap की तरफ देखने का कोई point नहीं है as of now. And it was never there. I mean, we have been speaking about IT for quite a long time, and I am always of the view that पोजिशनिंग समझो कंपनी का, अगर पोजिशनिंग सही है मार्केट में तो इवेंचुअली प्रीमियम उसको मिल जाता है. तो वैसे वैसे प्लेस हैं, अभी भी हैं. ऐसा नहीं है कि यू डोंट फाइंड सच प्लेस करंटली इन द मार्केट. कुछ बहुत छोटे हैं, so that's why doing the due diligence and speaking with the promoters very frequently, understanding what they are thinking, how they are able to change the direction. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटा कंपनी होता है बहुत, that promoter knows how to do their business, but they are probably not able to bring that into alignment with what market expects from them, right? So वहाँ पे जो anchor investors है, they, और कोई अगर बड़ा investor involved है, तो they have to kind of do the hand holding for the promoters and tell them, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे तो बेहतर होगा, and so on and so forth. So ऐसे ऐसा ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है.
but there are still plays where you have a nice positioning available. हम लोगों ने बहुत पहले, जब ये जीपीयू वगैरह का बात भी नहीं हुआ था, यूर वर द फर्स्ट फेज जहाँ पे हम लोगों ने जीपीयू कंप्यूट के बारे में बात किया था, आई थिंक 9 months ago, 7 or 8 months ago, I believe. And now you see everywhere, everybody's just going gung ho after all these GPU companies, and Nvidia भी stock भी all time high पे है. Similar positioning कुछ और कंपनीज में है, जैसे आप अगर देखोगे ताल एंटरप्राइजेस है, ऑनवर्ड है. ऑनवर्ड में द द प्रॉब्लम इन these companies is you cannot really assess these companies quarter on quarter, because specifically in case of onward, ये लोगों का डोमेस्टिक फेसिंग से इंटरनेशनल फेसिंग में बिजनेस गया है, सो वो ट्रांजिशन में है अभी भी. सो I would not look at them quarter on quarter, but year on year. The bet is on the jockey again, right? So similar case is there in Sonata. They are climbing up in value chain. जो पहले सिर्फ पेमेंट स्पेस में फाइनेंशियल बीएफएसआई में थे, now they are doing some niche work with Microsoft. न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, where I see lot of price hikes coming up. So ऐसे specific thesis अगर हम लोग play करेंगे तो there are still really good opportunities to play. And again, it's up to each individual, जिसको जो sector समझ में आता है वहाँ पे it's relatively easy to identify these opportunities and actually play. Uh, then technology space में there are some IPOs that are coming in, और कुछ unlisted space में कुछ companies है जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ. बट अदर देन दैट आप अगर देखोगे तो ये जो स्पेस है, कार्गो, पैसेंजर सॉल्यूशंस, एयरलाइन, ER&D, ये स्पेंड काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू आईटी स्पेंड. सो दैट्स व्हाई यू सी, आई वाज वेरी पॉजिटिवली सरप्राइज्ड व्हेन LTS announced that they were able to win that mega deal with SWC. I was expecting कि इन लोगों का मार्जिन कॉम्प्रेशन आएगा, बट एक्चुअली वो हुआ नहीं. So likewise, there are many such specific pockets which you can play selectively. It's again a stock pickers market, यार. कोई भी सेक्टर ले लो. Um, तो I think opportunities का कमी नहीं है, अगर आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का पोजीशनिंग कैसा है. I hope I've covered what you are asking. Great, Ameya. So, Ameya, although we had discussed, but again, barring this technology and IT thing, anything basis technical or maybe your study, any other pockets which you think, as we always say, opportunities are always available. So, anything more on यार वो that, like? पॉकेट जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, इट्स जस्ट लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट दो स्टॉक्स, बट अगेन उसमें मुझे कोई फंडामेंटली बिजनेस या सेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं. इट्स जस्ट दैट हैव प्लेड लाइक 2-3 साइकिल्स विद दो स्टॉक्स एंड एंडेड अप नॉट मेकिंग मनी, और इफ आई मेड मनी आई एंडेड अप गिविंग ऑल द मनी बैक टू मार्केट, राइट? स्पेशली लाइक वी टॉक्ड अबाउट सीलान, वी टॉक्ड अबाउट चेन्नई पेट्रो. हम दिल्ली में मिले थे तो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, इफ यू रिमेम्बर. तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं पिछले लाइक 15-17 साल से देखते आ रहा हूँ, उनको छोटा मोटा ट्रेड करते आ रहा हूँ. कभी उसमें पैसा बना, बट वो रुक नहीं पाया. आई एंडेड अप गिविंग दैट मनी बैक. सो आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ पर्टिकुलर साइकिल में ये स्टॉक्स मूव होते हैं, तो आई स्टार्टेड टेकिंग पोजीशंस इन दिस स्टॉक. सो अदर देन आईटी एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत मेरा इन्वेस्टमेंट अभी ये थ्रू अनलिस्टेड कंपनीज एंड ऑल दैट सोलर एंड ईपीसी कंपनीज में है. अदर देन दैट, Chennai Petro, Sealan, and Dredging Corporation are the three kind of completely different sectoral companies which I hold with purely on the basis of technical setup. And the underlying cycle through which these stocks have gone through over past, let's say, 18-20 years. स्पेशली चेन्नई पेट्रो का और सीलान का अगर देखूं तो मैंने पिछले 18 साल का साइकिल खुद लाइव देखा है मार्केट में. सो वो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से मैं इन स्टॉक्स को देखता हूँ. बट उसके अलावा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन दैट. रिसेंटली आप अगर देखोगे तो, कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी अगेन, OFSS ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया. फाइनली इट वाज लाइक कंप्लीटली स्लम्बर में से आउट ऑफ द, किसी ने उसको ऐसे झंझोड़ के जगा दिया, और टाइप्स रिजल्ट है वो. So I'm very keen to listen to what management has to say, because this can be potentially a tipping point that everybody was waiting for. OFSS में हर किसी को पता था कि the only problem in OFSS was the lethargic management, to be very honest with you. In
एट टॉप लेवल में जो लोग बंदे बैठे हैं, दे वर प्राइमरीली आफ्टर द डिविडेंड एंड ऑल दैट, राइट? सो कोई इनोवेशन का स्कोप नहीं था। कई बार उसमें डीलिस्टिंग के भी अटेम्प्ट हो चुके थे। बट अगर कुछ यहाँ पे जेन्युइनली चेंज हुआ है तो दैट इज समथिंग आई एम रियली कीन टू अंडरस्टैंड. So that is also an interesting play to actually look at. Great, So thanks.